Bismillahirrahmanirrahim. Highly esteemed Chief Guest, learned Advocate Janab Zafar Shah Sahab, President, Association of Private Schools, and all the organizations that work for the benefit and welfare of private schools, Janab Ji and Raj Sahab, respected Mr. Vijay Darji, Chairman, DP Dhar Memorial Trust and DPS School, Srinagar, dignitaries, school owners, chairpersons, a very good morning to all of you. Today, in fact, the entrepreneurs, the leaders in education have assembled here in order to discuss on some challenges, issues and opportunities that are being faced by the private sector in education. This is a known fact that private sector in education constitutes one of the largest stakeholders in the system, given the fact that there are 12 lakh students enrolled in almost 12,000 government institutions in comparison to more than 12 lakh students enrolled in just 5,000 private schools. Now, before opening this workshop conference discussion program, I would humbly request Mr. Vijay Darji to present a flower bouquet to our chief guest, Advocate Janab Zafar Shah Sahab. I would humbly request Janab Mubashir Bafai Sahab to welcome the guests formally. Respected guests on the dais and all dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome Senior Advocate Zafar Shah Sahab as the chief guest of today's event, Vijay Dar Sahab and our beloved War Sahab on the dais. We welcome them today's event on behalf of all schools, all private schools, even though some more will be joining us, but most of the private schools are represented by today's gathering. Education is the only tool that can change socio-economic condition of any society. Unfortunately, private schools have, unfortunately, the recognition of what private schools have contributed to the society in the last 30 years has not been properly put forward in the society. It has been BBC's recent report is that in next 10 years, artificial intelligence and robotics will take over and 400 to 800 million jobs would be lost. Are we prepared to face that challenge? Are our private schools ready to face that challenge? Even though we have faced those challenges in the last 30 years, but are we prepared? Given the conditions, the way government is dealing with private schools, the only way forward is we have to work together and see how our children can be benefited in future. That is the reason of today's program. We had several meetings with Zafar Shah Sahab, and he said that it is not possible that you 3 or 4 people can do anything. All of you have to come together and see how you can benefit the society and benefit this coming generation. So today's program would be, all the groups sitting in different tables would form their questions and answers, and we'll learn from our speakers on the dais. So before leaving, I would again welcome all of you who have come here and thank Advocate Zafar Shah, Dar Sahab and War Sahab to spare time today for this event. Thank you very much. Benjamin Franklin says that investment in education gives the best interest. It's a fact that our education system was set up in a time around Industrial Revolution. It was a time when
we were thinking that our rural youth should become urban employees. So we ended in a school system which is based on rote memorization and all other things, passing the examination and getting the degrees. But now, when the era has come with artificial intelligence, we have to think on new lines. I humbly request Mr. Vijay Darji to say a few words on this occasion vis-a-vis today's program. आदाब जी, गुड मॉर्निंग। अभी इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि यहाँ कश्मीरी सभी है ना। Mijn naam is Wana, my father's mother. Ilme lokatosus. तो बोला अगर क्या ज़ात कर स्कूल बने से, तन पता अगर क्या उसी तिल बने से अस्पताल, तन पता उस मस्जिद या मंदिर अगर बना होने से, और गवर्नमेंट बने से स्कूल. अगर वो आज वो today's consequence, I think she got me stuck very badly. Yesterday, I was with the Commissioner of Education, and a couple of days ago, I was with the LG. And I did convey to them that do you want private schools or you don't want private schools? But gentlemen, I must tell you what I was told. And very honestly, that in more or less an insulting way, he said, have you looked at all the private schools? Have you looked at the education that is going on today? Are we all honest about education? I don't think we are. That's my comment. Just now it was mentioned about the Industrial Revolution which led to education. Today there is a revolution in education. I mean, the education in the next 6 months to 1 year is going to change all over the world, not only here. We have to consider, are we prepared for that? If we are not, then we need to work together. If we don't work together, we will lose. We will be left behind. Unfortunately, I must also admit, I don't think everybody is thinking of an individual. I'm not interested whether a school makes money or doesn't make money, or whether there is a shortage of funds or more funds, or what we have to fight for. But we have to look inside us. Are we today doing justice to the education of tomorrow? Now, I've discussed with both the gentlemen. I said, what is RTE supposed to mean? So both of them told me that it means that you have to impart good education to the children in your neighborhood. My argument to that, of course I can't argue as well as Zafar Shah would. My argument was that you are already spending on a neighboring school. I have a neighboring school which has, I think, about 32 teachers and about 100 children. I said, you please fill those schools first before you come to me, because the government is already spending money on these schools. And then they'll be spending money on me too. When they give their child to me, they have to pay. It's not free, which I think all of you know. But they might pay you nominal. If they pay you, what they've fixed up today is that under RTE they can pay up to 2,500. Now, when it comes to school and institution, किसी शायर ने कहा खूब कहा है कि तू समझता क्या है गाफिल, मदरसा क्या नाम है, असलियत इसकी समझना आकिलों का काम है। तू समझता ईंट गारे की इमारत है, मगर फर्श पर बुनियाद इसकी अर्श आज़म बाम है। This is the status of a school, and when this is the status
we have to try to come up to the expectations of the public. Now we are lucky enough, we are fortunate enough to have with us our chief guest, senior advocate, Janab Zafar Shah Sahab. May I have the honor to request him to come up to the dais and address the audience. Janab Zafar Shah Sahab. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आप में से चंद असातिज़ा भी होंगे, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हूँ तो मैं पेशे से वकील, लेकिन आप लोगों के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा वो मुझे अगर याद होगा कोई 2014 जब फ्लड्स आए उसके बाद से मेरा ताल्लुक़ ख़ास तौर से वार साहब के साथ जो प्रेसिडेंट रहे थे उनके साथ रहा, और मुझे कुछ मौका मिला आप लोगों की तरफ से कोर्ट में केसेस करने का, जिससे मुझे खुद लगा कि कुछ स्कूलों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। हमारी गुफ्तगू के दौरान ये बात भी वाज़ह हो गई कि जिसका इशारा इस वक्त आपको भाई साहब ने भी किया कि उस वक़्त की जो सिचुएशन थी, उस वक़्त आप सब स्कूल जो थे अलग अलग थे, हर स्कूल अपनी अपनी जंग अकेले ही लड़ता था। तो दौरान गुफ्तगू ये बात आई कि आप लोग जो हैं प्राइवेट स्कूल्स, आप एक एसोसिएशन क्रिएट कीजिए। फिर एसोसिएशन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एसोसिएशन का वजूद में आना बहुत ही ज़रूरी था। उससे कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो आपके मसाइल हैं वो शायद इनफरादी तौर पर सिर्फ एक स्कूल के नहीं हैं, वो कॉमन मसाइल आपके या कॉमन प्रॉब्लम्स। नंबर 2, जब आप स्कूल चलाते हैं इसमें गवर्नमेंट का जो एक दखल अंदाजी होती है वो कानून के ज़रिए होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ज़रिए होती है, और उस कानून पे नज़र रखना, उन पॉलिसीज़ पे नज़र रखना, ये भी एक इंडिविजुअल का, एक इंफरादी हैसियत में एक आदमी का काम नहीं है। ये ऐसे मसले हैं जिसको सिर्फ जॉइंटली आप हल कर सकते हैं, या उसके खिलाफ जो इक़दाम भी लेने पड़ेंगे इकट्ठे ले लीजिएगा। तो इन बातों की गुफ्तगू के दौरान ये तय पाया गया कि हाँ ये तो एक अच्छी बात है, और इससे पहले भी मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला कई बार, जहाँ पर मैंने अपने विजन्स, अपने ख़यालात आप लोगों के साथ शेयर किए। मैं अब थोड़ा सा पहले हट के बात आपसे करूँगा। मैं स्कूल नहीं चलाता, लेकिन मैं इस शहर श्रीनगर के अदना शख्स हूँ। मेरा क्या नज़रिया हो सकता है जो शायद मैं एक आम आदमी का भी नज़रिया हो सकता है। स्कूल जो है ये ज़ाहिर सी बात है, आम ज़बान से तालीमी इदारा कहेंगे कि जो एक बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं एक तालीम हासिल करते हैं। तालीम की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इसमें अखलाक की ज़रूरत भी है, समाजी ज़रूरत भी है, माशरे की ज़रूरत भी है, और इस्लामी ज़रूरत भी है कि आपको तालीम हासिल करनी है और करनी पड़ेगी। आप लोग जो हैं, आप जिस वक्त एक स्कूल खोलते हैं, इसमें जो 2 बातें उभर के आई हैं, एक तो ये है कि स्कूल को आप बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कोई आदमी फैक्ट्री बनाता है, कोई आदमी प्रॉपर्टी डीलर है, कोई आदमी दुकान चलाता है, मॉल खोलता है। आप कहते हैं चलो हम स्कूल खोल लेते हैं, और स्कूल से जो आमदनी आएगी, उसका जो प्रॉफिट्स आएगा, वो प्रॉफिट्स आपको बच्चों की फ़ीस से आता है, तो आप अपना काम चला लेते हैं। ये एक नज़रिया इसका है। दूसरा नज़रिया इसका ये है कि तालीम एक मिशन होता है, एक प्रोसेस होता है, एक समाज का एक बड़ा अहम जुज़ है, जिसमें आप प्रॉफिट्स नहीं देखते हैं। आप ये देख लेते हैं कि जो इस कौम के बच्चे हैं, ख़ास तौर से अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, जो कश्मीर के बच्चे हैं, कि ये अनपढ़ ना रह जाएं, इनको तालीम हासिल हो। जब से वक्त बदल गया, हम नई सदी में दाखिल हो गए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारी इम्प्रूव हो गए,
میں نے بار بار آپ سے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 21ویں صدی کا بچہ ہے. He has to face the challenges of the 21st century. ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم تو 20ویں صدی کے لوگ ہیں, لیکن ہمارے بچے 21ویں صدی کے ہیں. آج ہمارے بچوں کی دنیا اتنی چھوٹی دنیا نہیں ہے جو دنیا شاید ہمارے وقت میں 50ویں دہائی میں یا 60 میں یا 70s میں ہوا کرتی تھی. اس کے لیے ساری دنیا کھلی ہے, گلوبل ورلڈ از اوپن فار ہم. لیکن کیا آپ کا اسکول اس کو ان چیلنجز جو 21ویں صدی کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اپنے اسکولوں میں کہ نہیں؟ میرا ایک ویژن ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی ریاست کو خاص طور سے جو بھی تبدیلیاں یہاں پر آئی ہیں یا جن حالات سے ہم گزرے ہیں, ایک خاص بات جو ہے کشمیر میں اور وہ شاید پہلے جس طرف دھیان نہیں دیا گیا, وہ ہے کین وی میک کشمیر این ایجوکیشن ہب. یہاں کا ماحول, یہاں کا ایٹماسفیئر, یہاں کا انوائرمنٹ کو مد نظر رکھ کر جب میں باقی اسکول کی طرف دیکھ لیتا ہوں, میو کالج از سمویئر ان راجستھان آن ماؤنٹین, میں اس کو دیکھتا ہوں, میں دلی کے آپ کے ماڈرن اسکول, ڈاکٹر صاحب کا ڈی پی ایس اسکول, جب ان کو دیکھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تو بکھرے ہوئے اسکول ہیں, ادھر ادھر ہیں, لوگ یہاں سے دارجلنگ چلے جاتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ اور وہ سب پرائیویٹ اسکولس ہیں, گورنمنٹ رن اسکولس نہیں, پرائیویٹ اسکولس ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے کشمیر میں بھی ایسے اسکول اسٹیبلش ہوں کہ باہر والے بچے یہاں آ کر پڑھیں؟ یہ میرا ایک ویژن ہے, یہ میرا ایک ذاتی خواب ہے, اور شاید وہی مجھے آپ کے ساتھ یہ وابستگی پیدا کرتا ہے. نہیں تو آپ اور مجھ میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو پیشے سے وکیل ہوں. آپ کے مسئلے کورٹ کے ذریعے, چاہے آپ در صاحب کے کورٹ سے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں, وہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اس ناطے تو میرا اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کیسے اپنا اسکول چلاتے ہیں, آپ واقعی بچوں کو پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں, آپ ان کو واقعی 21ویں صدی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. مجھے یہ سب باتیں نہیں پتہ, لیکن مجھے ضرور پتہ ہے کہ ہمیں آج تک ان 70 سالوں میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہوا جس کو ہم فخر سے کہہ سکتے تھے کہ یہ کم سے کم اس برِ صغیر کی سطح پر ایک بہترین اسکول مانا جائے گا. وہ نہیں ہوا. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آج سے یہ جو آپ کا ٹرینڈ بنا ہے پرائیویٹ اسکولس کا, میرے خیال سے پچھلے 20 یا 25 سال میں بنا ہوگا, اس سے پہلے یا 30 سال میں بنا ہوگا. اس سے پہلے تو یہ سب تھا, جو گورنمنٹ کے اسکولس تھے وہی تھے. بسکو اسکول ایک مشنری اسکول یہاں پر بنا, وہ تو 19th سینچری میں بنا, 1898-97 میں وہ بنا. اس کے بعد اور مشنری اسکولز آ گیا, آپ کا کارنر اسکول بن گیا, آپ کا بنیاد اسکول بن گیا. اب اندازہ کیجئے وہ لوگ کہاں سے, انگلینڈ سے, باہر سے, وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ نہیں تھے جو وہاں سے نکل کر آئے, اور انہوں نے وہ سارا وہ ماحول, اپنا کلچر, اپنا سارا جو کچھ بھی تھا وہ چھوڑ کے وہ آئے, اور یہاں لوگوں نے اسکولز اسٹیبلش کیے. اسی کو بولتے ہیں مشنری اسپرٹ, اسی کو بولتے ہیں مشن. لیکن انفارچونیٹلی یہاں وہ ڈیولپ نہیں ہوا. لیکن اب جو آپ لوگ ہمارے اپنے ہیں, آپ لوگوں نے, مجھے یاد ہے کئیوں نے کہا تھا کہ کچھ ہم نے اپنی جو ہماری پینشنز تھے, سیلریز تھے, گریجویٹی تھی, وہ پیسہ انویسٹ آپ نے اسکولوں میں کیا اور آپ نے اسکول کھولا, چونکہ آپ کا خود کا شوق تھا کہ آپ اسکول کھولیں اور اس قوم کو اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ دے کے جائیں تاکہ آگے بچوں کو اچھی تعلیم حاصل ہو. آپ نے اتنا سارا قیمتی وقت اپنا ہمارے ساتھ دیا, ہمارے ساتھیوں کے استفسارات کے جوابات دیے بہت ہی تسلی بخش اور بہت ہی مدبرانہ انداز میں. اس کے لیے ہم جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کم ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. Now to conclude, I request جناب جے انوار صاحب to throw light on the takeaways of this today's program and conclude this program with his address. ظفر صاحب انتہائی مشہور. ظفر صاحب چھنہ اسہ وکیل ییت کی, یم چھ استاد اور تھی پان چھ زانان سری کہ کت پٲٹھۍ زن ڈے ون پہ جس طرح ظفر صاحب مجھ سے ڈسکس کرتے تھے, یہ مجھے ڈانٹتے تھے, لیکن میں وہ باتیں پھر آپ تک پہنچاتا تھا. آج ہم اس جو سٹیج پہ ہیں جہاں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پورے کشمیر کے سکول ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے اور ہم اس کے لیے
जफर साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जब मेरी मुलाकात पहले उनसे हुई ये स्कूलों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते थे, जो हमारी इमेज थी। और फिर हर स्टेज पे हर प्लेटफार्म पे किस तरह इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी इमेज ठीक करने की कोशिश की कि भाई ये कोई चोर नहीं है, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा भी एक ये क्योंकि परसेप्शन था एज ए टीचर, यू नो, हम सिर्फ सोल्यूशंस पे आते थे, सिर्फ वन कुछ मिलन ये मिलन बेसा बेसा तक आसान लॉजिक कहीं ये वो कित पे ऑब्जेक्टिव कित पे हूँ तुम फर्म फाउंडेशन बन और यह रब सुंद एहसान वन मज यीज एसोसिएशन ग्राउंडस पे वैलिड ऑर्गेनाइजेशन यानी अगर कुछ जाए प्रोग्राम करान प्रॉब्लम गसान नफर सास आज तुम बड़ स्कूल आमत तुम पे प्यार 10:30 पे अगर हम इकोनॉमी स्कूल तम वतम 10:30 बजे 9:30 वुचा मे नश एजुकेशन सुन वो मे नश एजुकेशन तुम मे नश एजुकेशन तुम यम टाइमस पे वातान मे सह एजुकेशन कह 1 मिनट लेट गए दपा यू हैव एवरी राइट टू वेस्ट योर टाइम बट यू हैव नो राइट टू वेस्ट माई टाइम। खैर यह रब सुंद एहसान कि यम अंदाज जफर सबन फ्रॉम टाइम टू टाइम गाइडेंस कर बह वन ज्यादा कि जफर सबस खतर अजर आखिरत क्या गो रब सद फजल कर्म सत मजबूत बुनियाद तैयार बस बार बार वन यह ट्रेड यूनियन की यह बार वेलफेयर एसोसिएशन और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन ये मज अम वर कहें अम पे ज़ाती तौर तुंद अक मशहूर तिज इस्लामाबाद पे कोपवार पे कोलगाम पे तमाम डिस्ट्रिक्टों पे आमद नुमाइंदगी और कित पे आयु तुम सुबह कोता जाम तज मे पता कि कत्या मुश्किल तुम आयु टाइम दितु यह सोरे नीयत थवन कुन तरीके पी सोसाइटी ब्रो पकन क्या अगर पको ना ब्रो कि तेल कुछ पक ब्रो तुम वो सन इदार इवन सयासी तंजीम कजा कमजोर बेस लिहाज कि आज अथे लगान आज तमो मज बयान हेकान दित कि दुश्मन क्या ताकत तिम ना तम तीत वीक बेसी तुम बेसन पे कर बार बार वन जफर सब तो तुम बनो पन बुनियाद मजबूत यह बनो एजुकेशन हक बिजनेस की सोच मज नो नबर सह हक तम खतर जफर सब इन बहरहाल इन यह जिम्मेदारी क्या बिल्कुल अजीज पन इन वो कि अगर जन गवर्नमेंट मुलाजिम रोपये लाख ने तनख्वाह मोन स्कूल चेयरमैन क्या मस्जिद कमेटी ग मे दिन चंद या मोन टीचर क्या नी 10,000 यह हक मगर क्वालिटी एजुकेशन बेस नंबर 2 करो बह कर जफर सबस गुजारिश 3 कॉन्फ्रेंस थवन साउथ कश्मीर तक पॉसिबल ग सारी स्कूल हेकन योर वत ब्या थो नॉर्थ कश्मीर और प्रत कुछ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सो यह प्रॉब्लम तब करो कोशिश कि प्रिंसिपल गसान लाजिमन मीटिंग वो स्कूल कुछ अमल चलान सह प्रिंसिपल तम गसान लाजिमन मीटिंग मजार सह इखलाकी जिम्मेदारी हालांकि बह हम तुम नाव कि बह कर अक तुंद शुक्रिया अदा तक पानी समखनी दुहे तुम शुक्रिया पान यह कर अदा वनस मे मसल नंबर 1 थो किताब लोकल पब्लिशर प्रिंट कर मेक इट ए पॉइंट कि सह किताब तुम प्रायोरिटी पे कर कंसिडर लोकल पब्लिशर दिवान पान पब्लिश कर पान राइटर और सन बच्चे किताब लेखान तम करू प्रमोट महज हमो पोसो खतर मज और किताब लागान क्वालिटी गई ठीक क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर मगर लोकल पब्लिशर लोकल राइटर कर एनकरेज यम मसल स्टार्टअप आपका नाम क्या फहीम है नाम अच्छा सुधरा शायद यम स्टार्टअप सोज बह तुह नश अक तुम लोकल कोशिश ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट तुम पान पता कोट वो लकट लकट कह स्टूडेंट 10वीं जमात पान 12वीं या ग्रेजुएशन ITs मज तम नई नई सॉफ्टवेयर एप्स बनान या तम कह सोशल मीडिया मज तुम चीज फ्लोट कर तिम करियर बनान तिम रोपये दह बनान तम यंगस्टर्स 20 वरी 18 वरी तम करू एनकरेज तुम कहें कर स्कूल मज करू तुम कनेक्ट आप इससे आए हैं है ना तो यमन करू एनकरेज मे आए अक्सर शिकायत स्कूल वो दिवान मुलाकात यह जान चीज कह कम गवर्नर यू तकबर तुह नो ऐप है तुह नो प्रोजेक्ट है सह करू एनकरेज प्रत स्टार्टअप यह करू एनकरेज कल आप सोपोर जाना है ना
कल सोपोर का बड़ा स्कूल वेल्थ ने आप वहाँ से भी कल शायद नीट का एग्जाम है, कल आप इस टाइम। इसी तरह से ग्रीन वैली भी यहाँ है, इसी तरह से DPS वगैरह हैं, जहाँ जहाँ आप जाना चाहो यम करो एनकरेज कुन तरीके करो या सोचो कि माने मेरिट्स उसमें हम रिमोट कमेंट यमन आसन यम सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म तथ मज पोस्ट बना यह करो अत सत हम तुम बे इजाजत इंतहाई शुक्रिया तुम खासकर जफर सबस क्या है शुक्रिया अदा कर बार बार मे बसान तमाम स्कूलों मज यह हमेशा तस्कर अल्लाह ताला खुश मिल सा